This operation requires the helicopter speeds to be dropped significantly, forcing the pilots to operate at the fringes of the aircraft's limit. This requires immense training and high skill levels. Today, this display of precision is being done by Wing Commander Mayank Paliwal and Squadron Leader Mohit Thakur. हमारे जिन दर्शकों का अभी अभी इस स्थान पर आगमन हुआ है, उन सभी के लिए हम एक बार फिर से इसे पुनः दोहराते हैं। हमारा मी-17V5 हेलीकॉप्टर एक बार फिर से इसी कार्रवाई को करके दिखाएगा। और हाँ, ये याद रखिए, हम आपकी झील से पानी वापस भी लौटाने आएंगे। एक अद्भुत दृश्य, विज्ञान और मानव के साहस का एक दमदार नजारा। Mi-17V5 have been extensively used for firefighting in Rajasthan, Himachal Pradesh and Northeast India. The Indian Air Force has flown a large number of such missions like the Theni Forest Fire and also during Karnataka Reserve Forest Fire. माता न जन्मेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा में, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्रास मिले न कभी, यूं पीठ दिखाकर आगे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मरती। The Mi-17 is going to demonstrate the dousing of fire again. But this time, it will fly much lower to show how it can easily fly at this height.
The Mi-17 is demonstrating how it would fly in case it is operating in large open areas with less obstructions. Helicopter is operating at almost 50 meters only. From this height, the speed of water is less, but impact over fire point is much more. Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान है। यह विमान युद्ध काल में बम, रॉकेट एवं गन पॉड सहित कुल 1500 किलो तक के विस्फोटकों को भी अपने साथ ले जा सकता है। इस विमान ने सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम इलाकों से लेकर विभिन्न मानव सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में इस विमान के द्वारा अपनी उपयोगिता को साबित किया है। इस विमान द्वारा शत्रु सीमा में अपने कमांडो को भी प्रवेश कराने का कार्य लिया जाता है तथा खतरनाक इलाकों में अपने सैनिकों को रसद सामग्री एवं हथियार पहुंचाने जैसे दुर्गम कार्यों को भी अंजाम दिया जाता है। The Indian Air Force over the years has rendered yeoman service in times of disasters. All available resources of the Indian Air Force have always responded to enormous challenges with speed, resolve and fortitude. In the past 1 year, flood relief and rescue operations have been undertaken in Uttarakhand, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir. The Devgarh ropeway rescue in Jharkhand was another feather in the Indian Air Force's cap. The Indian Air Force also joined the firefighting operations in Rajasthan and Himachal Pradesh. Every day, the Indian Air Force undertakes numerous casualty evacuation missions in all types of terrain in various medical emergencies, stranding of tourists and security situations. Carrying out Bambi bucket operations in an urban situation is a challenging task wherein the nitty-gritty of drop are very precise. Owing to high-rise buildings and towers around, the chances of collateral damage are high and it requires extreme precision and no room for error. Dousing the fire with a Bambi bucket is no mean task, as the movement of the rotors of the aircraft cause the bucket to oscillate and make controlling the helicopter a challenge. दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे
कि इस प्रक्रिया में बड़े ही कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्थिर बकेट कभी भी विमान का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसे पायलट को लगातार नियंत्रण में रखना होता है। इस प्रक्रिया में पानी के अलावा आग बुझाने वाला फायर रिटार्डेंट फोम भी भरा जा सकता है, जो कि आग को जल्दी से जल्दी बुझाने वाला एक रसायन है। After dousing the fires in far-flung areas, the Mi-17 1V will now display its unique capability of inserting special forces into deep enemy territory, depicted here at Sukhna Lake. As a simulation exercise, Mi-17 1V will drop a Gemini boat into Sukhna Lake and provide assistance to our Special Forces commandos, who are already in another boat at the far end of Sukhna Lake. Whether they will come from right or left, for that, you will have to wait and watch. दर्शकों, आज इस सुखना झील में हमारा मी-17 1V हेलीकॉप्टर विमान एक खतरनाक अभियान का दृश्य उपस्थित करेगा, जिसमें इस झील के पास वह एक स्पीड बोट को उतार देगा, जिसमें सवार होकर हमारे कमांडो अपनी आगे की ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। Inducted in 2001, Mi-17 1V has flown extensively at the highest battlefield at Siachen Glacier. The helicopter is capable of carrying out armed special heliborne operations like small team insertion and extraction, helocasting, and slithering of up to 36 combat troops in confined areas undetected at low levels near the enemy objective. The helicopter is now flying at the nape of the earth and scanning for ground threats before insertion of the special forces,
This entire activity which you're witnessing is called halo casting in military parlance. दर्शकों, अभी आपने हमारे हेलीकॉप्टर को एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लौटते हुए देखा। अभी हमारे हेलीकॉप्टर ने पहले दुश्मन के पूरे इलाके की रेकी यानी कि छानबीन की एवं अब वह सही स्थान का चुनाव कर चुका है। अब विमान एक सुरक्षित स्थान पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इस कार्रवाई में पायलट को आदेशों को सुनने के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखनी है और कमांडो के साथ संपर्क बनाए रखना है तथा अपने हेलीकॉप्टर को दुश्मन की रडार से भी बचाना है। After having inspected the lake for any enemy threats and flying very low avoiding the enemy radar, the helicopter gets ready to make an approach. And while the helicopter gets ready to make an approach, let me introduce you to today's team who are performing this daredevilry stunt. The captain of the aircraft is Wing Commander Irfan Wahid Khanjarial, who is from the Queen of Hills, Shimla. An alumnus of National Defence Academy, he is commanding officer of 130 Helicopter Unit. Flying with him, his दर्शकों, इस कार्रवाई को हेलो कास्टिंग कहा जाता है और इस अभियान में आपने देखा कि हमारे हेलीकॉप्टर ने स्पीड बोट को दुश्मन की झील या नदी में नीचे गिरा दिया और हमारे कमांडो अब उस पर सवार होकर अपनी आगे की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से स्पीड बोट को नीचे उतारने के बाद कमांडो कितनी फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं। What you have witnessed is an amalgamation of robust engineering, dedicated training, supreme dexterity, absolute faith, and systematic coordination. The Special Forces boat is now headed towards for a quick retrieval. Our Special Forces troops are trained in combat search and rescue, destruction of enemy air defense, surveillance right in front of you in Beam 1 and Beam 2. दर्शकों, भारतीय वायुसेना में वर्ष 2019 में शामिल किया चिनूक हेलीकॉप्टर एक विशेष प्रकार का विमान है। यह विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर अपने बाकी हेलीकॉप्टरों से कुछ अधिक गुण को रखता है। अब आप देखेंगे इन दोनों हेलीकॉप्टरों की संयुक्त कार्रवाई और इन दोनों हेलीकॉप्टरों के विशेष गुण। This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions, and special heliborne operation. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machine and the plethora of roles that can be envisaged using its capabilities. अल्ट्रा लो लेवल पर आता यह विमान दुश्मन की रडार से बच निकलने की काबिलियत को दिखा रहा है। अब विमान एक साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे।
यह विमान अधिकतम 54 सैनिकों को अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। 10 टन से अधिक भार वहन क्षमता एवं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस विमान को एक विशेष विमान बनाती है। The state of being stationary in air at a point in space is called hovering, and it is said to be the most skilled task and requires a very high degree of precision and crew coordination. What you are seeing in front of you is Chinook has done a tailover maneuver. अब यह विमान एक ही स्थान पर रहकर 360 डिग्री घूमकर पुनः वापस आने की कार्रवाई को प्रदर्शित कर रहा है। दर्शकों, हवा में एक ही स्थान पर रुके रहने का नाम होवर है। इस समय दोनों विमान झील से बस 30 फीट की ऊंचाई पर ही हैं। Now in front of us, you can see the Chinooks living up to their unit name of featherweights. You can see both the aircrafts climbing up steeply and getting away as if it was nothing more than a featherweight. It is truly a marvel to see these giant machines being tamed by the skillful pilots. Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. And now you can see both the Chinooks are facing each other to perform its next maneuver. दर्शकों, अभी आपने देखा कि दोनों विमान आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से गति के साथ आते हैं और अचानक से रुक भी जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्विक स्टॉप भी कहते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों ही विमान एक साथ बाएं और एक साथ दाएं की ओर आ जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इस विमान का यह विशेष गुण किसी भी दुर्गम इलाके में इन विमानों को हेलीपैड पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतरना चाहता है वह स्थान कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
Flying at these ultra low levels requires precise timing and coordination of all muscles of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems treat to the eyes, ladies and gentlemen, do not try these stunts at home. While the aircraft gets ready to perform its next maneuver, let me introduce you to the crew. Beam 1 has Wing Commander Dogra, Sada Apna Chandigarh da Puttar, who has studied from Army School Chandigarh and has extensive flying experience in JNK and Siachen Glacier. Along with him is Squadron Leader Thakur, who is a qualified flying instructor. JW Rivatra and LAC Charan are with them. In Beam 2 is Squadron Leader Amok Deshmukh. Squadron Leader Amok Deshmukh has flown in many northeast places and he hails from Nagpur. Squadron Leader Surinder Singh Bhati has extensive flying experience in northeast hills as well. The seed of his flying dreams was shown here in the City Beautiful in Army School, Chandi Mandir. दर्शकों, आपने देखा था कि ये विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर न केवल आगे की ओर बल्कि ऊपर उठने के बाद पीछे की ओर से भी टेक ऑफ कर सकता है। दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हरा मेरा हर अंग है, शत्रु भी मुझसे दंग है, मेरे आगमन की आहट से वायु शांति भंग है, पल भर में मैं कर दूंगा शत्रु का काम तमाम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
Jai Hind viewers, from Sukhna Lake at Chandigarh, we celebrate the 90th anniversary of the Indian Air Force, as the act to establish the Indian Air Force was passed on this very day in the year 1932. With a humble beginning, with just 4 Vapiti aircraft, 6 officers and a handful of technicians, the Indian Air Force has grown in strength and stature and has become one of the most formidable force to reckon with. Today, it celebrates its foundation day, and we bring you a live telecast from the beautiful city of Chandigarh. A stupendous air show, air display that showcases the might and capability of the Indian Air Force. जय हिंद। भारतीय वायु सेना दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सभी दर्शकों का चंडीगढ़ की सुखना लेक से स्वागत करते हैं। पूरे देशवासियों को भारतीय वायुसेना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। आज भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस की 90वीं वर्षगांठ है। ये समारोह हरियाणा और पंजाब की राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। The spectators all waiting for today's air display to take place. That will happen very shortly after the arrival of the President of India. Today we will have amidst us Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. आकाश गंगा के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। These are the jumpers of the most famous Akash Ganga skydiving team of the Indian Air Force. These skydivers jump out of the aircraft and are highly trained and skilled. They are free-fall jumpers. After a descent, they open their parachutes and fly like birds up in the blue yonder, in the blue sky, like birds. पैराशूट जंपर्स का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। हजारों फीट ऊंचे उड़ते विमान से ये पैराशूट जंपर्स फ्री फॉल करते हुए नीचे आते हैं। That's a tricolor stack formation. What a beautiful sight up in the air. The colors of our tricolor, saffron, white and green, symbolizing our unity, integrity. भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर दर्शकों में बहुत उत्साह। And now you can see on your television screens Mi 17 V5
चंडीगढ़ का ये नैनाभिराम दृश्य बर्ड्स आई व्यू के रूप में सुखना लेक दूर दूर तक फैला हुआ, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह शहर। The Mi-17 V5 helicopter with a bamboo bucket attached to the underside of the helicopter that you can see. The bamboo bucket operations in an urban situation are carried out wherein the nitty-gritty of drop are very precise. Owing to high-rise buildings and towers around, the chances of collateral damage are high and it requires extreme precision and no room for error while undertaking these missions. दर्शकों और विशिष्ट जनों से सुखना लेक का ये परिसर भरा हुआ। बहुत ही उत्साह के साथ ये सारे दर्शक हमारे जांबाजों को हौसला अफजाई के लिए आए हैं। And now you can see halo casting, Mi-17 1V helicopter, displaying its unique capability of inserting special forces while they drop a Gemini boat into the Sukhna Lake and provide assistance to our special forces commandos who are already in another boat at the far end of the Sukhna Lake. There you can see the commandos in the other boat. Flying the helicopter is Wing Commander Irfan Wahid Khan along with Flight Lieutenant Varun Bharadwaj. Inducted in 2001, Mi-17 1B has flown extensively at the highest battlefield at Siachen Glacier. The helicopter capable of carrying out armed special heliborne operations like small team insertion and extraction and slithering of up to 36 combat troops in confined areas. And now what you can see is the Chinook helicopters that are based here at Chandigarh itself. The twin rotor helicopter Chinook, one of the latest inductions into the helicopter fleet. The helicopter just carried out the point turn. The unique capability of the platform being underslung operations, wherein the helicopter carries loads of all shapes and sizes hanging below the helicopter from its center into the battlefield.
सुखना लेक की इस प्रांगण से आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर। Today we will have amidst us Honorable Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwant Mann. We will also have Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar. Also with us will be Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. Today in the spectators gallery we also have many of our former air chiefs. President AFA, Mrs. Neeta Chaudhary. हरियाणा के राज्यपाल इस समारोह में आ चुके हैं। विभिन्न धार्मिक स्थल इस सुखना लेक के आसपास नजर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर हमारे बीच इस समारोह में आ चुके हैं। सांसद किरण खेर भी इस समारोह की शोभा बढ़ा रही हैं। सुदूर दिखता चंडीगढ़ शहर और उसमें जो खूबसूरत ढंग से ली कार्बूजिए ने बनाया है उसका एक नज़ारा आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही सीरीन सुंदर शांत सुखना झील। मुख्य अतिथि महोदय कुछ क्षणों में भारतीय वायुसेना दिवस के इस अवसर पर इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रही हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ ही राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, The Honorable President of India, accompanied by Honorable Raksha Mantri, has arrived. पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक माननीय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी भी उनके साथ हैं और ये मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय समारोह स्थल पर पहुंचते हुए
राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। That's an inside view of the Mi-17V5 helicopters. That's the ensign formation. The ensign formation carrying the national flag and the Air Force ensigns. What a beautiful aerial view, pre-recorded before they arrive onto the main venue where the audience is being seated today. भारतीय वायुसेना नवीनतम हथियारों, लड़ाकू विमानों से दक्ष है। ये किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है ताकि देश पर कोई आंच न आए। That's the first formation, the ensign formation, trooping the national flag and ensigns of the Indian Air Force. The formation is being flown by 152 helicopter unit, also known as the Mighty Armor. The formation led by Wing Commander Vishal Jain. Ensign 2 and Ensign 3 in big formation. The unit actively participated during the Kargil conflict and its aircrew led first aerial attacks on the Tiger Hill and Tololing to push back infiltrators from the Indian soil during Kargil operations. And that's an inside pilot's view from the cockpit. That's the light combat helicopter. The Prachand. The indigenously developed light combat helicopter, the latest addition in the arsenal of the Indian Air Force, recently inducted on 3rd of October 2022. Led by Group Captain Deepak Bishnoi.
And now you can see the captain of the aircraft. Yes, that is the Tejas aircraft coming with a thunder. Tejas in the sky. Group Captain Dinesh Kumar Dhankar in command of the aircraft. This is a pre-recorded shot just to give you an insight from the pilot's point of view. तेजस का आंतरिक व्यू आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ग्रुप कैप्टन दिनेश कुमार धनखड़ इसे लीड करते हुए। Tejas, the new generation multi-role aircraft capable of carrying the state-of-the-art air-to-air and air-to-ground weapon systems. And there, in the skies of Sukna Lake, Tejas. हवा से Aircraft in command of Group Captain Dinesh Kumar Dhankar. अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध तेजस Lightweight multi-role fighter. Its induction significantly enhances both the offensive and air defense capabilities of the Indian Air Force. The platform is incredibly maneuverable and it's a lethal dogfighter. अपनी वेग और गर्जना के साथ तेजस और अब आपके सामने And that's the yellow painted aircraft of the yesteryears, Harvard. The Harvard you see today is being One of the oldest aircraft to take to the skies is Harvard that you can see onto your television screens. The aircraft is now part of our heritage flight and depicts the Indian Air Force's journey over the past 90 years. It reminds us of the Indian Air Force's humble beginnings while inspiring the future generation. भारतीय वायुसेना का एक प्राचीनतम विमान आकाश में दृष्टिगत है। हार्वर्ड एयरक्राफ्ट हमारी विरासत का हिस्सा है जो भारतीय वायुसेना के 90 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। 1989 में ये एयरक्राफ्ट डीकमीशन्ड हुआ और 2015 में पुनः रीस्टोर कर विंटेज फ्लाइट के रूप में ये उड़ान भर रहा है। The aircraft, flown today by Wing Commander Amit Dupaukar and Wing Commander Anand Kumar Singh. They both are qualified flying instructors in the Indian Air Force. The aircraft painted in bright yellow, signifying its training role. जिनकी पग रज लेकर मैंने आगे बढ़ना सीखा था, उनके सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था। The Harvard aircraft. The Harvard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly the Hurricanes and the Spitfire. The aircraft was decommissioned in the year 1989. It became part of the Heritage Flight family in 2015 after restoration. अपनी बहुत ही सधी हुई उड़ान के साथ हार्वर्ड एयरक्राफ्ट हवा में गोते लगाता हुआ, कलाबाजियां खाता हुआ। With the determination and technical expertise of the Indian Air Force's maintenance crew, these vintage flying machines will continue to fly and inspire future generation of aviators and engineers. waggles its wings and pays a salute.
The aircraft waggles its wings and pays a salute to the chief guest. अपनी अनूठी प्रस्तुति के साथ इस एयरक्राफ्ट ने अपना सैल्यूट दिया मुख्य अतिथि महोदया को। The aircraft today flown by Wing Commander Amit Dhupavkar and Wing Commander Anand Kumar Singh. And now you can see the Chinook helicopters. Carrying underslung. दो चिनूक हेलीकॉप्टर M777 तोप को लेकर आते हुए युद्ध के मैदान में ये हेलीकॉप्टर हमारी तोपों को लगातार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे शत्रु को हमारी तोप की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता। दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी ये तोपों को पहुंचाकर शत्रु को अचंभित कर देता है। This formation led by Group Captain AP Singh. Carrying the artillery gun. And what a beautiful glimpse you can see now of the next formation on your television screens. That's the Eklavya formation. This is a pre-recorded shot while they are making their way for the venue today at Sukhna Lake. The Eklavya formation led by Mi-35 attack helicopters flanked by the Apache and the indigenous ALH Mark IV Rudra helicopters. And there they appear onto the skies above the Sukhna Lake. The Eklavya formation flying in arrowhead. The Mi-35 being led today by Wing Commander Kapil Rajput. Apache flown by Wing Commander Munit Dogra and Squadron Leader Sagar Bisht. The advanced light helicopters flown by Wing Commander R.K. Mishra and Wing Commander R. Vishnu. The Eklavya formation. Attack helicopters, also known as the flying tanks, thanks to the heavy